Yes, we begin with the process of photosynthesis, and this is sort of an overview in which you can see that photosynthesis can be divided into a light dependent phase and a light independent phase. Keeping in mind, of course, the light dependent word shows you that it needs the presence of light, and light independent में directly light की involvement नहीं है, but technically you can see that both these processes are happening in the chloroplast. है ना, ये पूरा chloroplast ही तो है. This is the chloroplast, and both these processes are happening inside the chloroplast. The only difference is that the light dependent stage needs light, which is shown over here, right? Yeah. And the light independent stage light के बगैर भी हो सकता है. ठीक है. अच्छा, अगर if I draw a line in the middle like this, let me draw a line in the middle like this. So this will show us the demarcation between the light dependent and the light independent. तो क्या नजर आ रहा है कि light will be absorbed and taken up by these thylakoid membranes. Thylakoid membranes show हो रही है ना, fluid filled spaces, stack of thylakoid membranes. So light is being absorbed by these because we know from our prior knowledge that the thylakoid membranes are rich in photosynthetic pigments, all sorts. Chlorophyll A, B, carotenoids, accessories, सब कुछ इसके अंदर photosystem 1 भी है, photosystem 2 भी है, हर चीज है, right? Yeah. Light आई, absorb हुई, and water is also there because where are we right now? We are inside a chloroplast, तो उसके अंदर पानी भी होगा, and water with the help of light is being split into oxygen. ठीक है? And at the same time, there are some reactions जो कि अभी नहीं यहाँ mention हुए हुए, but after light is being taken up by the photosynthetic pigments, those reactions are going to generate two very important products. कौन से products हैं वो? Those are ATP, okay, and NADPH. ATP and NADPH. So this means that the products that are formed as a result of light independent stage are ATP and NADPH, and sort of we are feeding these two products. Okay, we are feeding them into the next stage of the photosynthesis, which is the light independent stage, जिसको हम Calvin cycle भी कहते हैं, so that the Calvin cycle can utilize ATP and NADPH to reduce CO2, into finally a sugar molecule. If possible, repeat what I said right now. Okay, so from what I've understood is you have your thylakoid में light जब उस पे पड़ती है and water जब इसके साथ mix होता है, so you have your chlorophyll A, chlorophyll B, and your carotenoids. उनके जो two products हैं, that is ADP and NADPH, that is then incorporated. Then Miss, I've lost you at the Calvin cycle. Like here, I'm confused. Okay. Then this ATP and NADPH, वो क्या? It is what, carboxylated and it makes sugar, or what happens? वो तो हम करेंगे detail, but on this simple diagram, at least this thing is very clear that these are two things which are coming out of the light reactions and being fed into the Calvin cycle. And inside the Calvin cycle, we'll be using ATP, the power of ATP, and the reducing power of NADPH to reduce CO2 to a sugar molecule. Because this is what we want. What's the goal of photosynthesis? To make ATP. No, wait. To make sugar. To make glucose, sugar. हाँ, तो शुगर बनाने के लिए अब एक वन स्टेप में शुगर नहीं बन सकती. उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू स्प्लिट वाटर इनटू अ सिंपलर कंपाउंड, राइट? और फिर लाइट भी एब्जॉर्ब होगी थ्रू इनटू द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. उसके अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस होंगे बिकॉज ग्लूकोज बनाने के लिए भी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए. ठीक है, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिली? फ्रॉम द सोलर एनर्जी. हाउ? द सोलर एनर्जी वाज एब्जॉर्ब बाय दीज थायलाकोइड पिगमेंट्स so that we could make ATP and NADPH, and then we could use ATP and NADPH to reduce CO2 into a sugar molecule. Okay, so you use the power of ATP and the reducing power of NADPH to reduce CO2 into a sugar. ठीक है, राइट? और ये जो ऊपर जो शो हो रहा है ना NADP, ADP, इसका मकसद ये है कि मोस्ट प्रोबेबली जब ये जाते होंगे ना अंदर,
ठीक है, तो they must be recycled also. Yeah, so the ये left आपको off, the बता रहा है excess कि will then हाँ move out. So it's like, एग्जैक्टली यहाँ अंदर जाएंगे, ये काम करेंगे जो उनको करना है, एंड एट द एंड ऑफ द डे these two will be again recycled so that they can be fed again into the light dependent reaction. So this will, so in a way we can say that the light dependent and the independent reactions are not independent of each other, they are interdependent on each other, isn't it? That without light independent this can't occur, and without light dependent light independent cannot occur. So this means they are intertwined with each other, they are interrelated, और ये दोनों ही चीजें जरूरी हैं to make food or to make sugar, right? So this is an overview, and then of course at every step, just like कि हमने याद है जब हम cellular respiration कर रहे थे तो there was a big circle which showed you that these are the 4 steps of aerobic cellular respiration, and then we went into the details of each step, right? Similarly over here also we'll go into the details of every step. Acha, in aerobic cellular respiration there was one stage that happened in the cytoplasm of the cell, फिर बाकी सारे स्टेजेस जो 3 थे वो हो रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल वाज हैपनिंग इन द मैट्रिक्स एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाज हैपनिंग ऑन द क्रिस्टी. तो थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी यहाँ पे भी है कि the light dependent reactions will take place on the thylakoid membranes, whereas the light independent reactions will take place in the stroma, which is the cytoplasm of the chloroplast. ये बात समझ आ रही है? yeah. ठीक है, तो जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं वो यहाँ है. Are you tired, Abdullah? No, miss, I'm not tired. I'm just like listening to you. Sorry. अच्छा, okay. So just a minute. Start Private with solution. okay, got it. Acha, now so we start with this again. Just like the goal of respiration was to make ATP. So ठीक है, goal of photosynthesis is to make sugar, but to make sugar by 2 processes, mainly 2 processes. In the light dependent stage, our goal is to oxidize chlorophyll. याद है photoactivation. Electrons को हम energy देते हैं जैसे, हाँ ठीक है, because once the chlorophyll absorbs light, first of all याद है वो जो था आपका एक light harvesting center था जिसमें के first the accessory pigments they absorb light and then the energy is passed from one pigment to the other ताकि सबसे आखिर में जाके that entire energy is channelized to reach the reaction center. वो वाली बात याद है? Yes. या नहीं? Yes. We did this abhi, like we did this last lesson, no? हाँ, last time. So the goal of all that was to oxidize chlorophyll, क्योंकि जब chlorophyll oxidize होता है ना तो high energy electrons emit होते हैं, ठीक है, and then we will be using those high energy electrons to make ATP. बिल्कुल ऐसे ही हम करते थे ना सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कि हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करते थे ETC पे तो हम उनकी जंपिंग की एनर्जी यूज करते थे टू मेक ATP. याद है ना? सेम हम यहाँ पे ऐसे करेंगे. फर्क सिर्फ ये है कि we were doing that on the cristae, here we are doing it on the thylakoid membranes. Thylakoid membrane क्या है? Thylakoid membrane ये है, this is the thylakoid membrane. ये है ना thylakoid membrane. ये एक thylakoid membrane शो की हुई है, उसमें इतने सारे photosynthetic pigments शो किए हुए हैं कि light will be absorbed by one pigment, फिर second, फिर third, फिर fourth. और इससे पता चल रहा है कि इससे बहुत सारे फायदे हो रहे हैं. एक तो एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज हो रहा है, और एक दूसरी चीज क्या इंक्रीज हो रही है? द रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज इंक्रीजिंग, है ना? 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की लाइट यूज होगी फॉर photosynthesis, and each pigment has got the capability of absorbing light of a different wavelength. तो हर स्टेप पे आप क्या कर रहे हैं? जब लाइट एब्जॉर्ब हो रही है क्लोरोफिल से, so the chlorophyll is being oxidized. You'll use the word oxidize. Why do we need to oxidize it in the first place? We need the chlorophyll to emit high energy electrons. Question arises, क्यों चाहिए हमारा high energy electrons? Because हम इसकी energy use करेंगे to make ATP. ATP तो हमें बनाना है ना, बिल्कुल हमें ATP बनाना है लाइट डिपेंडेंट से. नजर आ रहा है? हमें ATP बनाना है. कैसे? हाँ, कैसे ATP बना सकते हैं? जब लाइट आएगी अंदर, when the light is coming inside and then it is being passed on through various photosynthetic pigments ताकि chlorophyll oxidize हो सके. So
दिस मीन्स दैट जो पीछे जो डायग्राम था ना, उसका एक वर्ड फॉर्म में मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैप बनाया है कि द गोल ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टू नंबर 1 ऑक्सीडाइज द chlorophyll in the light dependent phase and reduce the carbon dioxide in the light independent phase. Got it? Got it. Okay. सही है, because we just read the light independent. हाँ सही है, I understand. हाँ बिल्कुल, हमने यही चीज हमने क्या कहाँ देखी, इस अभी डायग्राम मेरी में देखी, में पड़ी थी. right? So I am actually, this was the diagrammatic representation and this is the verbal. अच्छा, then अब हम आ जाते हैं लाइट इंडिपेंडेंट को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं. लेट्स जस्ट फोकस ऑन लाइट डिपेंडेंट. लाइट डिपेंडेंट को याद रखना है ना, तो इट इज इक्वल टू 3 फोटोज. कैसे? फोटो एक्टिवेशन, photolysis एंड photophosphorylation. इनमें से हमने सिर्फ ये स्टेज कर लिया हुआ. I had to do this stage with you in the beginning. I did it last time. Yeah. क्योंकि हम photosynthetic pigments कर रहे थे, तो ये हो ही सकता कि we do photosynthetic pigments and we don't do photoactivation of chlorophyll. So we've done that. We are left with photolysis of water and we are also left with photophosphorylation. Acha. Going back to the chapter cellular respiration, Abdullah, tell me the definition of only, not photophosphorylation, only phosphorylation. What do you mean by that? Phosphorylation was when you add an like a inorganic phosphate group, like when you add a very yeah, very good, to any organic compound, to any organic molecule, right? phosphorylation देखो, ये सब phosphorylation. I'll show you what phosphorylation is ताकि एक समझ आ जाए बात कि this is also phosphorylation. Is this phosphorylation? Yes, right? Yes, it is. Yes, because by definition, what have you done? You've added an inorganic phosphorus to an organic compound, and of course, Organic. ADP is an organic compound. Okay? Yeah. Is this phosphorylation? Yes. Wait. Phosphate, yes. Glucose phosphate. Or I can say glucose plus phosphate is equal to hexose phosphate, or hexose plus phosphate is equal to hexose bisphosphate. तो ये भी phosphorylation है. याद है glycolysis में जो था. So wait, miss, you have to repeat. Okay, wait. मैं ऐसे बताती हूँ. We did this in glycolysis. अगर याद हो आपको तो. Glucose, yes. Wait. ठीक है? Yes. Yes. This is also phosphorylation. हाँ. Okay. So हाँ. Yes, you want to say something? सही, because हम उस पे ऐड कर रहे हैं ना. सही. हाँ. So the addition of inorganic phosphate to an organic compound is phosphorylation. Yeah. अच्छा, phosphorylation का फायदा पता है क्या होता है? कि आपको ATP मिलती है phosphorylation से. देखो phosphorylation हो रही है, you're getting ATP, right? एक और भी हमने phosphorylation की थी. कौन सी की थी? When we were studying cellular respiration, और हम जब ये बात कर रहे थे कि अब हम क्रिस्टी पे हैं, और क्रिस्टी पे ATP सिंथेज भी है और ETC भी है. ठीक है, ETC भी है. तो वहां पे क्या हो रही थी? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही थी. याद है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर. अच्छा, और तो उस वक्त जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही थी वो ये हो रही थी कि एक्चुअली ऐसे करके आपके उसमें टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम बना हुआ था आपकी
inner membrane का, and you know all these were the electron transport carriers. और हम दिखा रहे थे कि आपका जो है ना electrons jump कर रहे हैं इधर से उधर, they are jumping. So when they are jumping, the ETC is being reduced and oxidized in a series. तो इस oxidation reduction reaction की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के जंप होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उससे हम इवेंचुअली एटीपी नहीं बना रहे थे, याद नहीं आ रहा? ये किया था ना हमने, ठीक है? सो दिस मींस दैट हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि whenever phosphorylation is happening, and of course we are always using inorganic phosphate to add it to an organic compound, तो लेकिन जब भी ये होता है ना तो इसका एंड प्रोडक्ट एटीपी होता है, और यही जो है अभी कहाँ होना है? The same thing is going to happen over here in this stage. In light dependent reaction, we first oxidize the chlorophyll, ठीक? Then we split the water molecule, and then we do photophosphorylation. इस वक्त oxidative नहीं हम कह रहे हैं, इस वक्त हम कह रहे हैं photo. Why? Because this phosphorylation can only take place in the presence of photo, meaning light. ठीक है, ये खास किस्म की phosphorylation है जिसमें हमें light चाहिए. लेकिन just like all the other phosphorylations, we end up with synthesizing ATP. ठीक है? Now repeat what I have said, Abdullah. Like explain to me this page. ये जो है. Okay, so from what I've understood is, from what part? Like the whole page? The beginning. What do you understand by light dependent reaction, and why have I divided it into 3 stages? Okay, so the first part of it, it has to do with the photoactivation of chlorophyll, and basically that's what we did last lesson in when we looked at क्या कहते हैं, when we looked at the नहीं, अभी आप उसकी डिटेल में नहीं जाओ, जस्ट मुझे जो यहाँ पे नजर आ रहा है ना आपको, just tell me about that, especially about photophosphorylation. Okay, especially about photophosphorylation. Okay, okay. So when, okay, so आपका जो ADP था, that was, you use sunlight to convert ADP into ATP. So like the energy of the sun, right? So that involves addition of an inorganic molecule. So use. So then when you split your water molecule, it's known as photolysis, right? Like when your H2 is split into like a H plus and an oxygen molecule. What else am I missing? That's kind of what photophosphorylation is, right? When you're converting ADP into ATP by using light energy. हाँ, सही है, ठीक है, okay, fine. Okay, let's sum up this. Light dependent phase consisting of 3 photos: photoactivation of chlorophyll, photolysis of water, and photophosphorylation. The reason why we are not using the word oxidative phosphorylation is that over here the phosphorylation happens in the presence of sunlight, and the end product is the same, which is the synthesis of ATP. ठीक है? So let's do all of these in detail. ये तो हमने कर लिया है photoactivation. We'll be doing photolysis and photophosphorylation today, right? अच्छा. In fact, ये दोनों हम साथ साथ ही करेंगे. Let's look at this diagram. Which one is a better one? हाँ, this one is a better one. जहाँ पे ये लिखा हुआ था ना photophosphorylation, तो you could see कि वहाँ पे
There were two types of photophosphorylation. One was cyclic and the other was non-cyclic. This one. ठीक है? Okay. नजर आ रहा है cyclic and non-cyclic? Yeah, ठीक है? non-cyclic, So non-cyclic. we will be doing cyclic, non-cyclic or photolysis of water together on this diagram. अब ये देखो. Cyclic and non-cyclic photophosphorylation. What is shown to you over here is you've been shown two photosystems. One is photosystem 1 and the other is photosystem 2. ये रहा photosystem 2. This is photosystem 2, PS2, and this is PS1. This one. Technically, since both of these are photosystems, so this means that we kya hai actually? They're nothing but a group of thylakoid membranes made up of many accessory pigments and one reaction center, because one photosystem is equal to one light harvesting complex plus one reaction center. बिल्कुल ऐसे जैसे पीछे दिखाया था ना मैंने आपको कि ये रहा आपके जिसको मैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कह रही हूँ Yeah. ना, वो दैट मींस हाँ Yes, सारे that एक्सेसरी what was I पिगमेंट्स. saying? Say a light harvesting complex. Say. ठीक है, और इसको मैं कह रही हूँ रिएक्शन सेंटर. So these two, this and this together makes up a photosystem. And then there What? can be two kinds of photosystem. If a photosystem is primarily absorbing light of a wavelength 700 nanometers. 700 nanometers, तो वो ये है, और 680 वाला ये है. अच्छा, अब देखते हैं क्या हो रहा है, right? Let's first look at the photosystem 2. पहले 2 को देख लेते हैं. Light is falling on photosystem 2. ठीक, फॉल हो रही है ना जब, तो यू कैन सी अंदर क्या पड़ा है, क्लोरोफिल पड़ा है. इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, वो सब कुछ हो रहा है, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड the energy level of the electrons is being increased, और ये energy level का increase आपको नजर आ रहा है in the form of an arrow. I'll just complete this arrow like this. ये energy level बढ़ रहा है electrons का, ठीक है? And you can see ये tiny सा जो ये लिखा हुआ है ना, 4 electrons लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एनर्जी लेवल उनका बूस्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग इमिटेड. ये इमिट होना दिखाया जा रहा है फ्रॉम द ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल. इतनी बात समझ आ रही है? Wait. Explain this last part. कि जो energy ऊपर हो रहा है, like it's going from down to up. What does that have to do with the Okay, electron? I'll explain. One second. देखो, चलो इसको जूम इन कर लेते हैं. फोटो सिस्टम 2, right? Full of photosynthetic pigments. So we expect light energy to be absorbed by all those pigments and the chlorophyll to be oxidized. When chlorophyll is oxidized and when it is photoactivated, it is going to release high energy electrons. ठीक है? They will be released. और उनकी एनर्जी लेवल क्यों बढ़ रही है? इसलिए कि these electron, देखो लाइट ऐसे आई थी, जो यहाँ हो रहा है ना वो यहाँ एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ. लाइट पहले इससे टकराई, then this, then this, then this, then finally this. Now when the light has reached here ना, तो ये हम हैं फोटो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके अंदर रिएक्शन सेंटर के अंदर. अब इसमें एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन्स का है ना वो बिल्कुल बूस्ट हो गया है, बहुत ज्यादा हाई हो गया है. एंड दीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द क्लोरोफिल. ये रिलीज हो गए, ठीक है? सही है. अच्छा, अब ये रिलीज हो गए ना, ये जो एरो है ना, ये एरो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना तो इनका एनर्जी लेवल ऊपर चढ़ गया. तो ये एरो आपको इसका एनर्जी लेवल बता रहा है कि दीज आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स इट, और कोई मकसद नहीं है इसका. ठीक है? अच्छा, then there is, पहले we used to tell the students about the names of these electron acceptors, लेकिन अभी हम सिर्फ x और y कहते हैं. We say when the electrons are released, they are accepted by an electron acceptor which is x. ठीक है? x. And then when the electrons are accepted, फिर क्या होगा? उस accept होने के बाद they now are moving down. अब ये down कौन सी जगह है? This place is actually the ETC. Because हम ये कहाँ हैं? We are all on the thylakoid membranes. ये सब क्लोरोप्लास्ट के अंदर है. So now what is happening? वही वाले electrons जो कि यहाँ से release हुए हैं ना, let me just make those electrons. तो these electrons are jumping. और यहाँ पे ETC मैं दिखा देती हूँ आपको. ये रहा electron transport carriers. ठीक है? So electrons are jumping. Okay. बिल्कुल उसी तरह जैसे वहां पे नहीं कर रहे थे. Yeah. अच्छा, now when they are jumping, so when they jump, their
energy is used to do what? To support this reaction जो आपको नजर आ रहा है, और ये रिएक्शन उन्होंने इसके ऊपर दिखाया है, ETC के साथ ही दिखाया है. What? ADP plus inorganic phosphate gives rise to ATP. So this means that the jumping of these high energy electrons, and as they jump along the ETC, of course they're going to release some energy. So that energy is used to synthesize ATP from ADP and inorganic phosphate. समझ आ रही है बात? Yes. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, उसके बाद now where are these electrons falling back? These electrons are falling back into the photosystem 1. Acha, by the time they fall back into photosystem 1, they have lost all their energy. So they need a boost. They need a reboost. So they get a boost by light. Okay, सही है. समझ आ गई? लाइट इनको बूस्ट दे दिया. अच्छा, अब लाइट ने बूस्ट दे दिया, तो जब लाइट दोबारा बूस्ट देगा तो एग्जैक्टली वही हो जाएगा जो यहाँ हुआ था, 4 इलेक्ट्रॉन्स. राइट? Right. यहाँ पे तो सारे, बिकॉज ये फोटो सिस्टम 1 है, तो इसके अंदर सारे पिगमेंट्स हैं बिल्कुल इसी तरह से. ठीक है. सो द क्लोरोफिल विल बी ऑक्सीडाइज्ड, द इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड. अब एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आ गया, वाई. वो एक्सेप्ट करेगा, एंड एक्सेप्ट करने के बाद अगेन वही चीज होने लगेगी. वापस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप करेंगे और वापस जो है ना वो इधर आ जाएंगे. सो दिस विल कंटिन्यूअसली टेक प्लेस. Yeah. कंटिन्यूअसली. And ये right पे क्या जा रहा है? राइट पे बता रही हूँ. Okay, okay. सही है, I understand. ठीक है. अच्छा,